मार्केट से किताबें गायब नहीं हो रही, और किताबें जल्दी लेने से आप जल्दी नहीं पढ़ पाओगे या ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। जस्ट मेक श्योर that you don't end up being a content collector, you are here to become a district collector. Even our parents say that कि एक बार दे के देख लो, क्या पता तुम्हें समझ में आ जाए, क्या पता किस्मत चमक जाए, प्री निकल जाए, तुक्के ही तो लगाने होते हैं, लग गए तो मेंस देने का मौका मिल जाए। अगर आपने 1000 वर्ड पढ़ा है तो शायद 500 वर्ड लिख पाओगे, पर आप मान ले किसी टॉपर के नोट्स पढ़ रहे हो and you have read only 200 words, so you will hardly be able to reproduce like 50 words. Answer writing is an art of structuring the content. Okay, अब वो कंटेंट तो आपके पास नोटबुक में भी पड़ा हुआ है। आप 6 से 7 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ क्लास कर रहे हो, what is the time that is left for your self study? What is the time that you will be having for revision, for answer writing, for say test and all? आपके पास कुछ नहीं है। You will try to make the smart work, smart efforts. आप गधों की तरह घिस्सू काम नहीं करोगे, मजदूरी नहीं करोगे। You will be doing it, you will be putting the effort, but with an intention that you should get a better return on investment. So hi, this is Karandeep Sir from LevelUp IS, and I am an anthropology teacher and a mentor to GS students as well. So I have been asked to talk about some of the basic mistakes that the students do when they start preparing for civil services. Okay, and this is something that I'll tell you from my experience as well, because before becoming a faculty here, I also was a aspirant, and I have spent around 5 years in doing this. Okay, so just understand the nature of this exam, and what is actually required is not merely the content or not merely the knowledge. What is required here is more the strategy. ये एग्जाम पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी पे चलता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, इफ यू हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, then there is a high likelihood that you will get qualified in the very first attempt itself. Okay, and if the strategy is bad, if you are basically not following a good strategy, no matter how hard work you do, how much of effort you put in, the chances that you will qualify the exam is very much minimal. Okay, आप उस लूप में फंसते रह जाओगे। एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग who might be knowing a lot of things and who might have put in a lot of efforts were basically not able to qualify, not because we were less intelligent, not because we were not knowing much, but mainly because हमारी strategy गलत थी। And at that point of time, I think कोई experience आदमी का ना होना हमें बताने के लिए, that is major reason that I was not able to qualify. I missed the final cutoff 2 times. Okay, reached the stage of interview but could not manage to qualify it by a marginal score. Okay, कि strategy सही नहीं। So here I'll just highlight some of the basic mistakes that we people do and that you should avoid in order to ensure that your first attempt should become your last attempt. Okay, so the first thing that we'll talk about is the idea that the timeline, or how much of time is actually required to prepare. Normally, there is a myth that 1 year is enough for preparation. No. Let me tell you that if you have to start from the scratch, if you're beginning this preparation, you require minimum 1.5 years for the preparation. Okay, so you're planning whatever you're doing should have a plan of 1.5 years, not 1 year. 1 year, आप basically कुछ सारे subjects को एक बार पढ़ ही पाओगे. Okay, you will just be able to give a basic reading to it, or most likely you will not be able to finish the syllabus also. Okay, in 1 year, you will require minimum one year to get familiar with the subject, encompassing all the contents, or say one place. Okay, doing the optional also at one say consolidating the content at one place, and at least 3 to 4 months you will require for revision, for say kind of inculcating that idea. एक साल में तो आप बस नए नए कंटेंट पढ़ते चले जाओगे और एक जगह पे सब कुछ ला के रखोगे, एंड देन मे बी 3-4 महीने 5 महीने आपको लगेगा उसको रिवाइज करना, उसको रिमेंबर करना, उसको रिकॉल कर पाना, उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर पाना. ओके, एंड दैट्स व्हाई whenever you start planning, start it with a horizon of minimum 1.5 years, not ever take a horizon of 1 year. Okay, so for example, if you're planning for 2027 attempt, January is the suitable time to prepare. And if you think that I'll start my preparation from May or June this year, okay, so then in such case the 2027 attempt is not suitable for you. You should aim for 2028. Okay, so that is my first suggestion. 1.5 year के horizon को दिमाग में रख के prepare करना चाहिए. One thing. Second, the major problem is
that we usually start with the optional. Okay, so most of the people, they think that कि चलो optional से शुरू करते हैं, optional खत्म हो जाएगा, optional बहुत important है, and people they start thinking about the optional कि कौन सा optional लेना है from the very first day since they start the preparation, without knowing what part of the syllabus of UPSC they are getting more interested in. आपने अभी तक UPSC की कुछ भी तैयारी नहीं की, but the first thing that you will decide or choose is your optional, and you start your classes with your optional because you have chosen the option. Now the thing is, when you start your UPSC preparation, you might decide, or say you might feel interested in politics, you might feel interested in some other subjects, maybe geography, maybe science and tech, or maybe some other aspects. And based on that, you can then decide what optional you want to choose. Okay, maybe if you're finding polity interesting, or say if you're finding, say, some subjects interesting, you can basically take an optional which might be very much similar to it. Okay, आपको अपने इंटरेस्ट का तभी पता चलेगा, first thing. Second, more any optional that you will be reading, say any of the humanities optional specifically like sociology, anthropology, sorry, psychology, anything, they require a basic knowledge of GS. If you don't have the knowledge about modern India, if you don't have the knowledge about art and culture of India, you don't have the knowledge about world history, some basic laws of politics, or say Indian constitution, बहुत सारे ऑप्शनल में एवरीथिंग might seem more abstract in nature. बहुत ज्यादा आपको हवाबाजी लगेगी. Because you will not be able to relate to the ground realities, and the optional teacher will not go and teach you from the basics. So starting from the optional will actually make you feel the UPSC journey bit tougher. Okay, but having a basic idea of GS and then starting with the optional, that might actually make you feel that the UPSC journey is relatively lighter. Okay, so that is why don't start with the optional, start with your GS. It will help you in choosing a better optional जिसके साथ आपका interest align कर रहे हैं. And second, it will have you, or it will make you understand the subject even better, because optional do require some basic knowledge of GS. So only once you are done with the GS, or some basic aspects of the GS are done, then only starting the optional will make some sense. So develop some kind of familiarity with every subject and then start with the optional. Don't start with the optional and then move to GS. Okay. Third major problem is doing optional and GS together. Say I just started a coaching, मैंने उसी कोचिंग में ऑप्शनल की भी क्लास ले ली, उसी कोचिंग में जीएस की भी क्लास ले ली, और एकदम दोनों साथ में शुरू हो रहे हैं, दोनों को साथ में कर रहे हैं. Now it seems like I have created a 1 year plan and I'm thinking to do the GS and optional together. And what actually happens that you will be spending 6 to 7 hours a day doing classes only. आप 6 से 7 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ क्लास कर रहे हो, what is the time that is left for your self study? What is the time that you will be having for revision, for answer writing, for say test and all? आपके पास कुछ नहीं है. आपका पूरा का पूरा दिन सिर्फ क्लास करते में निकल जाएगा. You will not have a time for anything. Okay. Plus, if somehow आपने किसी तरीके से एफर्ट लगा के बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, 6-7 घंटे क्लास कर रहे हैं, 4-5 घंटे मैं एक्स्ट्रा पढ़ भी रहा हूँ, that is not sustainable also. You will not be able to sustain it for 6 months. एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बर्नआउट इतनी जल्दी हो जाएगा that you will not feel like going to the GS class or the optional class, and you will start skipping both the GS and the optional together. Okay, and that's why initially you might feel that I have all the energy, मैं जितनी energy exert कर दूं. But remember, this is a test match, not a 1 day or a 2020. You will have to maintain that optimism, you will have to maintain that consistency, not for just 1 day or 1 month, but rather for a 1.5 year or at least 2.5 years, 1.5 years of preparation and 1 year of that cycle. अगर आपको ये say basically consistency 2.5 साल तक maintain करनी है, then in that case you will have to maintain a balance, have a schedule that is sustainable. You can do it for 2.5 years. नहीं तो आप शुरुआत में अपने आप को इतना exert करोगे तो within 4-5 months you will start feeling that burnout कि आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा. So that's why do not do GS and optional together. Start slow, start lighter. Okay, so start with the GS, get used to the subject, develop a schedule. You are able to study at least 8 to 9 hours a day. And then once you have developed a flow in the GS, then in the mid, you can then start with the optional. Because that would not feel anything overwhelming. अभी आपने college pass किया है, you have just started, and all of a sudden you decided कि मेरे को UPSC करना है, मैं 14-14 घंटे पढ़ूंगा, और मैंने GS और optional एक साथ ले लिया. तो ना जीएस अच्छे से होगा, ना ऑप्शनल अच्छे से होगा, आप बीच में ही बर्नआउट फील करोगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई स्टार्ट विद द जीएस, मूव विद द फ्लो, डेवलप अ फ्लो, एंड देन मूव टू द ऑप्शन. ओके, सो दैट इज द बेस्ट वे.
or maybe 1 year with the GS, and then maybe the 6 months you can go only with the option, and उस point of time पे आप GS को revise करो. That can also be done. Are you getting this? So make sure that you should not do the optional and GS at least from the beginning. Somewhere in the mid, when you have developed the flow with the GS, only then you should start the option. Then the next major problem or the trap that the students face basically is resource hoarding. Okay, remember that you are here to become a district collector. You should not end up being a content collector. Abhi, the moment we start preparation, what happens is that you keep on accumulating anything or everything. आपको हिस्ट्री की जितनी पॉसिबल किताबें हैं सब खरीद लोगे, सारे पीडीएफ डाउनलोड करके रख लोगे, सारे कोचिंग का मटेरियल एक साथ एक जगह पे लाके रख दोगे, सब टॉपर्स की कॉपी आप एक जगह पे लाके रख दोगे. नाउ व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली टाइम तो लिमिटेड है, रीड आपने कुछ नहीं किया, बट कलेक्शन में आपके पास सब कुछ है. नाउ एक्सेसिव कंटेंट विल एक्चुअली डीमोरलाइज यू. बहुत ज्यादा डीमोरलाइजेशन होता है कि आपको लगेगा कि इतनी सारी किताबें ले तो ली हैं, पढ़ा कुछ भी नहीं है, और ना पढ़ने का टाइम है ना पढ़ने की हिम्मत है. And you will start feeling FOMO also, that even if you finish one book or even if you finish two books, when the list or the compilation that you have is too big, you will never have a feeling of closure, you will never have a feeling of completion at all. कुछ भी लगेगा नहीं, तो आपको हमेशा लगेगा कि ये इसमें से कुछ छूटा हुआ है, ये किताब पढ़नी है, वो किताब पढ़नी है. You will end up being a content collector. Okay, plus it might create more confusion than bring clarity. Having more content is not a good thing. इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन कि इसमें से पढ़ूं या उसमें से पढ़ूं इसका. और आप शुरुआत में ही 2-3 किताब को एक साथ लेके चल रहे हो, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली समराइज देम, मर्ज देम टुगेदर. So rather than being a content collector, you should ensure that you should start with one basic resource at a time. Once you have finished the basic resource, then buy another book or then take up any other source, rather than buying everything at the time. मार्केट से किताबें गायब नहीं हो रही, और किताबें जल्दी लेने से आप जल्दी नहीं पढ़ पाओगे या ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे. Just make sure that you don't end up being a content collector. You are here to become a district collector. So one thing at a time. Start with the basic books. Once you're done with the books, then go for some other material. Don't fall into that trap or the race कि ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से ले ले, वहां से ले ले, बहुत ज्यादा कंटेंट. It is not going to benefit you. It is going to demoralize you. It is going to create more confusion than the clarity. Okay, so save yourself from this kind of traps कि बहुत ज्यादा कंटेंट एक जगह पे चाहिए. And I have seen people, they make a folder of UPSC, उसमें बहुत सारे सब folders बना के they create some kind of content that might be in some terabytes, और एक पूरी हार्ड डिस्क भरी पड़ी है वीडियोस से और किताबों से और पीडीएफ से, आर्टिकल से. लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, कितना पढ़ा है? Hardly few lectures, hardly few books. And when you have so many choices, you will never be able to maintain a schedule also. कि आपने अगर सोचा कि मेरे को कोई सब्जेक्ट खत्म करना है, and when you have tens of books for that subject, you will never be able to read. एक बुक थोड़ी सी भी बोरिंग लगने लगी, then you think that कि चलो ये किसी और से पढ़ते हैं, चलो ये किसी और से पढ़ते हैं, तो eventually you end up doing nothing. आपने effectively कुछ नहीं किया है. So please save yourself from this trap of resource hoarding. Okay, don't do that. Next is the topper's strategy or topper's copy strategy. See, ये in general हमारे पूरे इंडिया में है. We basically need some kind of god man. हमें लगता है हम बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं लोगों को. ओके, एंड हर फील्ड में देयर आर सम काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन जहां पे दैट एक्सपर्ट्स दे माइट बी गिवन द गॉड लाइक स्टेटस. ओके, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन. In case of UPSC also, we usually idealize the toppers so much so that their words become the words of a god. Now understand that topper is nobody different. He is just one among you. And he was able to qualify the exam just because he put up his right strategy. So what you can learn from the topper definitely is not the content, but the strategy that he followed. Okay. And दूसरी problem topper strategy को blindly follow करने में ये है कि आप content तो बहुत ज़्यादा means copy करोगे तो आप shortcuts में जा रहे हो. For example, if you are reading like thousands of words, okay, 1000 word, you will find it difficult to write, say, or you will be able to write like 500-600 word. आप अगर आपने 1000 word पढ़ा है तो शायद 500 word लिख पाओगे. पर आप मान ले किसी टॉपर के नोट्स पढ़ रहे हो,
and you have read only 200 words, so you will hardly be able to reproduce like 50 words or 60 words. आप 1000 वर्ड पढ़ के 400 वर्ड लिख पा रहे हो, तो 200 वर्ड पढ़ोगे तो आप 80 वर्ड ही लिख पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर रिटेन ईच एंड एवरीथिंग. एंड कभी भी जो बंदा नोट्स बना रहा है, द टॉपर, व्हेन ही वाज मेकिंग द नोट्स, ही वाज नॉट मेकिंग द नोट्स थिंकिंग दैट कि जब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा तो ये नोट बाकी बच्चे रेफर करेंगे. ही इज मेकिंग द नोट्स एज पर हिज कैपेबिलिटी. कुछ चीजें उसको याद हैं, कुछ चीजें उसको समझ में आ गई, तो उसने उस नोट्स में बहुत ज्यादा नहीं लिखा, वो बस उसको रेफर करके छोड़ देगा. एंड कुछ चीजें उसको जो याद नहीं है और मे बी उसको ज्यादा एफर्ट लग रहा है रिटेन करने में, तो ही विल राइट इट इन मोर डिटेल. ना एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ मेक नोट मेकिंग, बेसिकली बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ. एंड वो टॉपर ने ये नोट्स इस सोच में नहीं बनाया था कि मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एवरीबडी विल बी रेफरिंग माय नोट्स. सो दैट वाज नॉट क्रिएटेड as a note of reference. That was created a note for revision for him, in which he decided what is important for him, he decided what is not important from him, and based on that, that notes were made. अब हम उसके नोट्स को पूरा का पूरा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बोल के ये टॉपर ने लिखा है तो यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए. ओके, सो दैट इज ए बैड थिंग. सेकेंड, टॉपर स्ट्रैटेजी में भी हमें ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ रीसेंसी बायस. रीसेंसी बायस मीन्स, say any of the topper, when he will be coming and he will be delivering his strategy, the major problem that comes is कि उसको 1 या 1.5 घंटे में पूरी बात बतानी है. अपनी पूरी जर्नी जो उसने 2 साल 3 साल या 4 अटेम्प्ट्स में जी है, उसको उसको 1 घंटे में पूरा बताना है, बिकॉज वी डोंट हैव द पेशेंस और ही डज नॉट हैव द टाइम टू एक्चुअली एक्सप्लेन दैट फॉर मे बी ए डे और समथिंग. अब आप अपनी 4 साल की जर्नी को जब 1 घंटे में समराइज करना चाहोगे, तो यू कैन नॉट टेल एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग. अब उस 4 साल में उस बंदे ने कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी, and उसकी वजह से he has ended up somewhere, or say the knowledge that he has accumulated or the idea that he has developed or the strategy that he has developed is a result of wisdom of 4 years. वो पहले अटेम्प्ट में नहीं डेवलप हुआ. अब यूजुअली क्या होता है कि आपने चौथे अटेम्प्ट या तीसरे अटेम्प्ट बाद क्वालिफाई किया, तो लोगों को रिसेंसी बायस होता है. हो सकता है कि उसको लगा हो कि शायद जो पिछले 6 महीने में मैंने किया है वही रीजन है मेरे क्वालिफाई करने का. एंड ही जस्ट, और मे बी शायद उसके फ्रेश मेमोरी में यही रहा होगा कि 5-6 महीने में जो किया है वही मेरा सक्सेस का रीजन है. बट ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 years 4 years and that entire journey will be missed or will be skipped, and what he will tell you in that one hour is just what he has done very recently, maybe last 6 months में या इस मेंस में उसने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की. ओके, and that is when you might not be able to get the entire strategy in just 1 hour. So remember, you can learn something from the topper, but don't follow the toppers blindly. Okay, every individual, remember, every individual is unique and everybody has his strength and weakness. You should first understand or identify your strength, capitalize upon your strength, अपनी weaknesses को identify करो and try to remove it or try to resolve it. That is what you need to do. And जब आपकी weakness कुछ आप identify करो कि ये मेरी major problem है कि मुझे याद करने में दिक्कत होती है, मेरी English खराब है, या मेरी, then see somebody who was having the same kind of problem and how he dealt with it. Then it will tell you some kind of better solutions or say better way to handle your weaknesses. अगर आप रैंडमली किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो बोल के कि इसने ऐसा बोला अब मैं भी ऐसे करूंगा और मेरा भी हो जाएगा, नहीं. उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस अलग थी, उसने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है. यू विल डेवलप द स्ट्रैटेजी विच इज सूटेबल फॉर यू, योर पर्सनैलिटी. एंड इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग in your personality that is your weakness, just find some topper who had the same weakness and how he managed it. Okay, and that will be a better way to handle your, or say that is a better way to actually interact with the toppers. Okay, so this is the next major problem कि आपको toppers को blindly follow नहीं करना है. Then the major problem that we have is like we randomly start reading the books. कि चलो पॉलिटी से शुरू करते हैं, चलो लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर देते हैं. ओके, और स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू कर देंगे मॉडर्न इंडिया से. कुछ 1-2 बुक किसी ने बताई, बोले कि आप ये पढ़ो और इससे हो जाएगा. ओके, अब हमने रैंडमली कोई किताब पढ़ना शुरू कर दिया, कवर टू कवर पढ़ना शुरू कर दिया अभी, लेकिन हमें यूपीएससी के सिलेबस का कोई आइडिया ही नहीं है. आई डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द सिलेबस, or I don't remember the topics also. So I don't know which topics are important, which topics are mentioned in the syllabus, which topics are not mentioned in the syllabus. Second, even if I know the syllabus, I'm reading as per the syllabus, I don't know the PYQs. मैंने पुराने क्वेश्चन देखे ही नहीं है. अब जब तक आपने पुराने क्वेश्चन नहीं देखे, if you have not seen the PYQs, you basically are
ट्रैवलिंग इन द डार्क, आपको पता ही नहीं है कि ये नेचर ऑफ एग्जाम कैसा है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, what will be the depth of the answer, what kind of answer they expect from you in the prelims and mains. Okay, in all such cases you are just moving in the dark. आपको पता ही नहीं किस टॉपिक को कितने डेप्थ तक कवर करना है और कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक. But when you see the PYQ, when you have the knowledge of the syllabus, it will basically act as your navigator. It will act as your compass. Direction देगा आपको कि इस टॉपिक से देखो इतने सवाल रिपीट हो रहे, दैट मींस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई नीड टू कवर इट इन मोर डेप्थ. इस टॉपिक पे बहुत सारे एनालिटिकल सवाल आते हैं, तो आई नीड टू नो द एनालिटिकल पॉइंट्स आल्सो. Okay, or if this topic is very much repeated, this topic is hardly repeated, then and then you will also see that कि इन topics में कुछ trend है कि every alternate year या तो ये पूछा जा रहा है. So based on that you will try to make the smart work, smart efforts. आप गधों की तरह घिस्सू काम नहीं करोगे, मजदूरी नहीं करोगे. You will be doing it, you will be putting the effort, but with an intention that you should get a better return on investment. तो आपको हमेशा कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, कोई भी बुक पढ़ने से पहले, just understand what are the areas of the syllabus that you are covering, and in that part of the syllabus what are the questions that have come and how frequently the questions are coming, to what depth they are exploring this area. That will help you optimize your effort to get a very good return on investment from that particular say topic. Okay, so that is, ensure that आपके पास कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका सिलेबस, उसकी PYQs आपके सामने हो, so that you will be able to have a better strategy or a better way to cover that particular topic. Okay, next, and this is something that is very common, the trial mindset. कि हम लोग ना पहला अटेम्प्ट तो ऐसे सोचते हैं कि ऐसे हल्के में दे देते हैं कि चलो एक बार दे देते हैं, 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट में किसी ना किसी अटेम्प्ट में तो हो ही जाएगा, तो एक दो अटेम्प्ट वेस्ट भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है. दैट इज द ट्रायल माइंडसेट. एंड इवन अवर पेरेंट्स से दैट कि एक बार दे के देख लो, क्या पता तुम्हें समझ में आ जाए, क्या पता किस्मत चमक जाए, प्री निकल जाए, तुक्के ही तो लगाने होते हैं, लग गए तो मेंस देने का मौका मिल जाए. मैंने और समबडी विल टेल दैट कि तुक्का से देने गया था एंड मेरा प्री निकल गया, तो मैंने 3 महीने में मेंस की तैयारी कर ली और हो गया. ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप. ओके, रिमेंबर दैट कि आपने 6 महीने पहले पढ़ाई शुरू की एंड सोचा कि पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही दे दूंगा, सीरियस अटेम्प्ट दूंगा. आई सी लॉट ऑफ पीपल, दे कम हियर लाइक 2 अटेम्प्ट हो गए. मैंने उनसे जब पूछता हूँ कितने अटेम्प्ट हो गए, तो कहते हैं सर अभी पहला सीरियस अटेम्प्ट दूंगा, अभी तक मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए, लेकिन वो सीरियस अटेम्प्ट नहीं थे, वो तो मैंने कॉलेज में रहते रहते दे दिए या उसके बाद ऐसे जॉब के साथ दे दिए, ये सोच के कि एक्चुअली व्हेन यू आर गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट यू शुड एंश्योर दैट दिस फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट. एंड ये ट्रायल माइंडसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके ये जो एनर्जी है, दैट इज द पीक ऑफ योर एनर्जी, दैट विल बी ड्रेन्ड इन द ट्रायल अटेम्प्ट ओनली. ओके, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, बेसिक पढ़ा, थोड़ा बहुत ही सही, चाहे ट्रायल माइंडसेट से पढ़ा, पर आपको एक्साइटिंग लग रहा है, यू आर फाइंडिंग दैट टॉपिक टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, एंड बट आप उसको किसी स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ रहे हो, थिंकिंग दैट कि ये वाला तो ऐसे ट्रायल अटेम्प्ट है. So what will happen the next time when you will read the same topic, you will not have the same kind of enthusiasm, you will not have the same kind of energy, you will not have the same kind of interest in that particular topic. आपको वही चीज बोरिंग लगेगी. पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, you will feel like our constitution is so good, our constitution में इतने सारे provisions है, because this is everything new to you. But reading the same book maybe third time, you will not have that kind of interest. So the second attempt will not be that energetic, not that enthusiastic, not that optimistic in nature. आपकी peak energy खत्म हो गई. So make sure that I will do a very serious preparation from the very beginning, will not go with the trial mindset, and I'll ensure that the first attempt should be the last attempt. So पहले दिन से वो strategy follow करूंगा and ensure करूंगा कि consistent तैयारी कर रहा हूं, and so that whatever attempt I give, the first attempt, I should be well prepared mentally, academically, in every way, and that should be my last attempt. I should not leave anything for the next attempt. क्योंकि वो energy, वो enthusiasm, वो interest क्या पता रहे ना रहे. Okay, and that's why ensure that कि you should not go with this trial attempt mindset. Okay, and then the last major problem that we have when we start preparing for GS or say optional as such, we think that कि पहले syllabus खत्म हो जाएगा फिर आंसर लिखेंगे. So answer writing आप छोड़ते हो, and thinking that कि with the finishing of the syllabus when I'll start doing the answer. Actually this is a
way of your brain to postpone. Okay, वो comfort zone से बाहर नहीं निकलना चाह रहा, and that's why the brain is trying to give you the reason not to write the answers. कि it will try to tell you that कि एक बार syllabus खत्म होगा तभी तो अच्छे answers लिख पाएंगे. No, answer writing is a different thing. Remembering something is very different thing. You don't need to remember things to write the answer. Answer writing is an art of structuring the content. Okay, अब वो content तो आपके पास notebook में भी पड़ा हुआ है. You can develop that art from the very first day of your class. You don't have to wait that the syllabus will end and then I will start answer writing. आप पहले दिन से शुरू करो. आप रोज एक दो आंसर्स लिखो, so that in the entire journey of the preparation of 1.5 years, or say when you are reading for around 450 days, if you write one answer daily or two answers daily, you will be writing around 900 answers approximately. 500 से 900 आंसर्स आप लिख सकते हो. 500 से 900 आंसर्स मींस अप्रोक्सीमेटली 100 आंसर्स और 150 आंसर्स फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट. 2 optional and GS 1 2 3 4, and writing like 150 answers for each of the subject, you will have written answers for almost every important topics that have been asked in the mains. अब आपने एक टॉपिक पे एक आंसर लिखा हुआ है, you have created some kind of structures, so what will happen that it will become easier to recall. Plus you will develop muscle memory कि आपने लिखा हुआ है, it will become, so आपको बिना सोचे आप लिख पाओगे. Plus the skill of answer writing that will improve like anything. एक ही चीज को आप 400 दिन 450 दिन कर रहे हो. Imagine the kind of command you will have after 450 days if you have written 2 to 3 answers every day. And imagine you are doing it for 2 months, 3 months only, or maybe किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके बस आप कर रहे हो. If you are not doing it daily, you will never feel confident about the answer writing. So make sure that whatever you read in the class, whatever you read every day, you ensure that कि उसके जो PYQ हैं prelims वाले वो भी करें, और साथ साथ PYQs जो मेंस वाले हैं, मेंस में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो I should be able to write an answer on this. तो इससे that will make sure that your topic is getting completed also. आपको एक टॉपिक का कंप्लीशन का आइडिया कब होगा? नॉट बिकॉज यू हैव रेड सम कंटेंट ऑन दैट टॉपिक, but if you're able to answer all the questions that have been asked related to that topic in the previous year questions. Okay, so आपको प्री में जो पूछा गया क्या उस टॉपिक से सवाल आप सारे आंसर कर पा रहे हो? आंसर इज यस, तो आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया. मेन से जो सवाल पूछे गए उस टॉपिक से रिलेटेड, इफ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, द आंसर इज यस, you will be able to finish, so that means that particular topic is complete from your end. So make sure that you start answer writing from the very first day that you start your preparation, rather than waiting for the right time to begin. Okay, or waiting for the syllabus to end and then starting answer writing. Okay, plus आप कहीं पे भी क्लास करोगे, that will make sure कि आप अपने टीचर को अकाउंटेबल रख सको. क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, you are not seeing the PYQs, in that case you don't know what part of the syllabus is being covered, how much of it is being covered, whether it is being covered adequately or not. But if you're seeing the PYQs, if you're answer writing regularly, you will know that ki whatever the teacher is teaching, whether he is ensuring that syllabus complete ho raha hai, whether it is relevant or adequate as per the paper that is being asked in the UPSC, or is it something like teacher kuch aur padha raha hai aur UPSC kuch aur hi pooch raha hai. Okay, so please make sure that you do the answer writing the very first day when you start your classes. Okay, so this is the major important traps that you should avoid when you start your preparation for UPSC. Okay, and based on that, what I would summarize is that देखो, अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो January is the most suitable time for it. Don't wait for May or June to begin, and don't ever start with your optional. Start with your GS and start your journey. And if you need any kind of help from my side, you're more than welcome for this. Plus, if you have any doubt, you can post it in the chat box and I'll be more than happy to address it. Any doubt, anyone? There are multiple options for resources. How to choose? Multiple options. See, multiple options तो सबसे पहले तो आप बेसिक बुक्स को चूज करो, जैसे कि NCERTs are there. Okay, so that is the standard books. Then second, there are certain standard books for GS. Okay, जैसे कि political लक्ष्मीकांत है, geography के लिए GC Leong है, and that is the standard book. Second, if you have joined any coaching institute, okay, or maybe you are planning to join, say, LevelUp IAS for that, so in that case, ensure करो कि आपके जो भी subject के teacher हैं, just consult him or her and ask that whatever material that that particular teacher is providing or the coaching is providing,
whether I need to supplement it with some other resources or can I rely completely on coaching also. So for example, in case of LevelUp, we make sure that the material that we provide you, that will be a compilation of all the standard books. So one stop solution is there in the GS material itself. तो आप उसको रेफर कर सकते हो. मे बी यू डोंट नीड टू रेफर एनसीईआरटीज एंड से अदर स्टैंडर्ड बुक्स सेपरेटली. बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एनसीईआरटीज से शुरू करना है एंड देन फॉलोड बाय सम स्टैंडर्ड बुक्स फॉर द सेम सब्जेक्ट. मैंने ऑप्शनल से स्टार्ट किया, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं करता जाऊं. अब इसमें तो आंसर मेरा यस ही होगा. अगर नहीं हो रही है तो यू कैन डू दैट. हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट डेली. नो, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉज या कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का तरीका क्या है? वह फर्स्ट वे इज टारगेट्स एंड शेड्यूल्स. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर that you have a schedule and you should have daily targets or monthly weekly targets like that. So you should be dividing your entire schedule maybe for a month and into weeks and daily targets. अगर आप daily कोई target नहीं है and you are reading it randomly कि चलो आज पॉलिटी पढ़ लेते हैं, कल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, परसों कुछ और पढ़ लेंगे, so in that case you will never have that consistency because you don't know what is your goal that particular day. But when you have set up a goal and you know that this particular in realization of this goal I will have to spend around 8 hours or 9 hours, so in that case आपका mind हमेशा उसी loop में रहता है when you set up a goal, when you have a target. But if you start reading like कि चलो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब पॉलिटी खत्म करनी है, पढ़ते अब जितना टाइम लगेगा लगेगा, so in that case you don't have the daily target and you are basically your mind is not working in any kind of constraint. Your mind is like free. आप कुछ भी कर लो, आज ठीक है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आप कुछ कर रहे हो, थोड़ा टाइम इधर उधर दे रहे हो, you will never be focused. So ensure that ki you should have daily target and schedule. Second, in order to ensure that you follow this daily target and schedule, you should have some mechanism of incentivization also. आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड भी दो. दैट मीन्स सपोज आपने कुछ डेली टारगेट रखा एंड अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो यू कैन गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड कि अगर मैंने एक वीक तक अपना शेड्यूल कंप्लीट कर लिया तो आई ट्रीट माई सेल्फ विथ बिरयानी और आई ट्रीट माई सेल्फ विथ पिज्जा और आई विल बेसिकली टेक दिस संडे ऑफ इफ आई एम एबल टू फिनिश द शेड्यूल. संडे का ऑफ लूंगा एंड आई विल गो एंड वॉच अ मूवी, आई विल गो एंड वॉच ए सीरीज. मैं पूरे दिन कुछ पढ़ाई नहीं करूंगा एंड दैट इज एन अर्नड गिफ्ट, दैट इज एन इंसेंटिवाइजेशन. कि अगर आप कुछ इंसेंटिवाइज कर रहे हो अपने आप को तो यू विल फील प्राउड, यू विल नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ गिल्ट, क्योंकि वो आपने खुद को अवॉर्ड किया है कि मैंने ये टारगेट रखा था 6 दिन का, मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है एंड दैट्स व्हाई आई हैव अर्नड अ गिफ्ट. सो आपको गिल्ट नहीं आती है कि यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं खेल रहा हूँ. बिकॉज this is something that you promised yourself that you will read 6 day consistently and 7 day you will take it for a break. So that is incentivization होना चाहिए आपको. Okay, and that is connected with your target and schedule. Normally क्या है, टारगेट शेड्यूल नहीं है तो आप क्या होता है, पॉलिटी पढ़ने बैठे हो लेकिन क्या हुआ कि मोबाइल देखने बैठ गए, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी आ रही थी या सीरीज है तो आपने पूरा दिन वेस्ट कर लिया नेटफ्लिक्स की मूवी. आप पूरे दिन रात में गिल्ट में सो गए, यार आज तो मुझे पढ़ना था लेकिन मैं नेटफ्लिक्स की मूवीज या सीरीज देख रहा था. Okay, but if you have basically linking your incentivization with this thing, you will be consistent, you will be motivated ki I want to watch the movie on Sunday and that's why I need to follow the schedule regularly. So that is the two things that you should keep in mind in order to be consistent. Next one, I really struggle with making a daily routine and the topics that I should cover. Okay, उसके लिए तो आपको किसी मतलब मेंटर से या किसी आपके जो सीनियर वगैरह आप उनसे मिलो एंड सिट विथ हिम, टेल हिम द शेड्यूल आपका जो भी जॉब के साथ है एंड यू कैन कम ओवर हियर आल्सो, आई कैन सिट विथ यू, आई कैन अलॉट सम टाइम टू यू एंड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आई कैन टेल यू कि इतना टाइम आप ऐसे से डिवाइड कर सकते हो. ओके, बट फॉर दैट वी नीड टू नो दैट कि आपके पास जॉब के अलावा कितना टाइम बचता है, आपके हॉलीडेज कौन से, वीकेंड्स कौन से छुट्टी है या नहीं है, आपकी 6 days वीक की जॉब है या 7 days a वीक की जॉब है या फिर 5 days a वीक की जॉब है. सो वट एवर इज द नेचर ऑफ योर जॉब दैट विल डिटरमाइन योर शेड्यूल. सो उसके लिए आपको किसी के साथ बैठना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी गिविंग यू. Is it compulsory to read 6th to 12th NCRTs? Yes. Okay, not all, but there are selective NCRTs in every subject that you are supposed to read, that you should have a basic knowledge. Not all the NCRTs. All the NCRTs में around 50 NCRTs हैं. 50 NCRTs नहीं पढ़ने की जरूरत है. Around 26-27 NCRTs are there that you need to read out of 6th and 12th. NCRT कंप्लीट करने के बाद फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए.
I don't think so, because foundation itself, any teacher would start from the scratch. एक बेसिक नॉलेज 6 7 की एनसीईआरटी आप पढ़ लो ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो, बट अदर देन दैट फाउंडेशन में दे विल कवर इट और दे विल स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच. आई डोंट थिंक कि आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करके ज्वाइन करना चाहिए. एंड आप फाउंडेशन इसीलिए कर रहे हो कि दैट यू वांट समबडी टू टेक दैट पेन फॉर यू एंड टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. व्हाट टू डू इफ वी आर फॉरगेटिंग सम कांसेप्ट्स? सी, रिमेंबर दैट कि ये सब बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है दैट यू विल कीप ऑन फॉरगेटिंग. एंड दैट इज व्हाई you should tell your brain that this is not the last time I am reading it. Okay, आपको अपने ब्रेन को देखो, हमारा ब्रेन हमेशा ना हमें ट्रिगर करता रहता है, एंग्जाइटी देगा कि यार भूला जा रहा है पिछला वाला, आगे कैसे पढ़े, तो वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है. बट whenever such kind of thoughts come up, you should tell your brain that I am not reading it for the last time, nor is the exam tomorrow. कल एग्जाम नहीं है, अभी टाइम है. So I will revise it multiple times before the exam and I will be able to retain everything. So even after first reading, if you are able to retain 50%, जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि आप मिनिमम 3 4 रिवीजन करके प्री या मेंस दोगे. तो हर रिवीजन पे अगर आप 10% ज्यादा याद कर पा रहे हो, दैट मींस आप पहली बार में 50% याद है, नेक्स्ट रीडिंग में 60% याद होगा, थर्ड रीडिंग में 70%, एंड मे बी फोर्थ या फिफ्थ रिवीजन में 80 85% तक आपको याद रहेगा. एंड दैट 80 85% इज मोर देन इनफ टू मेक यू क्वालिफाई द एग्जाम. सो जस्ट टेल योर ब्रेन दैट यू आर नॉट going to the exam tomorrow. There is n number of times I will be revising, and just move ahead. So remember, to qualify or to finish a subject, there are 3 steps. First is finish the syllabus, and while you're finishing the syllabus, you should be answering the PYQs. And the third one is time management. So once you do this, then you go time management, मतलब कि same topics को मतलब time based manner में आंसर लिख सकते हैं, टेस्ट लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, and then go for revision. So if you have not finished the syllabus and PYQs, there is no point of revising the same topic multiple times. आप एक बार syllabus खत्म करो, आप बहुत बार revise करोगे उसको. So just tell your brain that this is not the last time I'm reading the same thing. I have taken batch only for GS2 with dot. Also, I got confused whether I should go for his material only or shall I refer to Lakshmikant as well. But I think of taking other batches as well. अब उस केस में मतलब अगर आप सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी कंटेंट को चेक करने का कि वो कंटेंट कितना सही है, आप पीवाईक्यूज देखो उसके साथ. अगर पीवाईक्यूज सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं तो दैट मींस द कंटेंट दैट इज बीइंग कवर्ड इज अप्रोप्रिएट. पर अगर पीवाईक्यूज ही नहीं कवर हो रहे हैं तो दैट मींस द पर्सन हु इज टीचिंग यू इज बेसिकली एंश्योरिंग कि बस वो टॉपिक को ऊपर ऊपर से कवर कर रहा है, बट ही इज नॉट मेकिंग श्योर दैट आपके पुराने सवाल हो जाए. So make sure करो कि whatever topic is being taught just correlate with the PYQs of both prelims and mains at least last 10 years के. And if you are able to solve all the PYQs from whatever content is being taught in the class, that means your content is enough. But अगर नहीं कर पा रहे हो तो that means you need to supplement your content with some other sources. Current affairs strategy. So in case of current affairs, see, there are means दो तरीके हैं. एक तो अगर आप करंट अफेयर्स खुद से करना चाहो तो उसमें क्या है कि यू शुड बी टेकिंग अप ए और रीडिंग ए न्यूज़पेपर एवरी डे. ओके, एंड इन दैट न्यूज़पेपर 1 hour डेली शुड बी गिवन टू द न्यूज़पेपर रीडिंग, नॉट मोर देन दैट. हो सकता है शुरुआत में इट माइट टेक अराउंड 2 2.5 hours, बट धीरे धीरे योर स्पीड शुड इंक्रीज सो दैट यू शुड बी रीडिंग द एंटायर न्यूज़पेपर इन 1 hour. ओके, सेकंड, बट डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ दैट न्यूज़पेपर, क्योंकि एक न्यूज़ है दैट विल बी गोइंग ऑन फॉर मे बी 10 और डेज और 15 डेज, और तब जाके आपको कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स मिलता है. तो आप एक ही न्यूज के ऊपर एक ही टॉपिक पे ऊपर 10 15 दिन से रोज न्यूज आ रही है तो आप रोज नोट्स बना रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता. एंड न्यूज़पेपर विल हेल्प यू कीप इन टच. इट विल आल्सो हेल्प यू इंक्रीज इंप्रूव योर आर्टिकुलेशन. ऐसे वैसे लिखने में भी फिलर्स बहुत मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है. बट in order to create a content of the current affairs for revision, you should be taking up monthly magazine for current affairs. So that is, न्यूज़पेपर से आपको आइडिया लग रहा है, मंथली मैगजीन उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस मंथ के करंट अफेयर्स को कंपाइल करके दे देगी. ओके, सो दैट इज द 2 थिंग्स दैट यू शुड डू अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो. और सेकंड इज लाइक यू कैन जॉइन सम क्लासेस, बट after joining the classes also, the current affairs material that will be provided in the class, that you should read. And second, newspaper is then must, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं दे रहा, इट इज एक्चुअली इंप्रूविंग योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट. लिखने की क्षमता भी बढ़ाएगा, अंग्रेजी इंप्रूव करेगा, एंड इट विल गिव यू ए लॉट ऑफ फिलर कंटेंट. मतलब कंटेंट को बढ़ाना कैसे है, कुछ फिलर कंटेंट बीच बीच में क्या लिखना होता है आंसर्स में, ऐसे लिखने के लिए कैसे करना है, बहुत सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर से मिलती है. दैट्स व्हाई यू शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर. ओके,
how to prepare notes for mains, like topic wise and theme wise in GS. I would suggest कि notes तो topic wise होने चाहिए. So basically the broad topics, maybe the chapters in the standard books, उसके basis पे, and topic wise में you should be then dividing the topic on the basis of major PYQs. Okay. So PYQ से आपको थीम का आइडिया लग जाएगा कि किस किस डोमेन में पूछ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर देख रहे हो तो एग्रीकल्चर में 3 मेजर एरियाज हैं, इनपुट से प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. अब इनपुट में कुछ कुछ मेजर एरियाज हैं दैट दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, लाइक फर्टिलाइजर के ऊपर पूछ रहे हैं या मशीन्स के ऊपर पूछ रहे हैं. ओके, या सीड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन है. सो दैट इज द मेजर इनपुट एरिया. क्रेडिट की बात है, क्रेडिट फैसिलिटी की बात है, तो दैट इज द इनपुट. देन प्रोसेसिंग में बेसिकली द हार्वेस्टिंग वाला पार्ट, या फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, या फिर सप्लाई चेन का एस्पेक्ट है. आउटपुट में बेसिकली कंजम्पशन एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, एक्सपोर्ट एंड ऑल से रिलेटेड इश्यूज आर देयर. सो जस्ट that PYQs will tell you the themes that UPSC is covering in a particular topic. So you should be dividing it into topics, and the theme you should be able to get it from the PYQs. Which is best subject is best to start after foundation? I would suggest कि GS करने के लिए पॉलिटी सबसे बेस्ट तरीका है. मतलब पॉलिटी इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद. पॉलिटी और ज्योग्राफी दे आर लाइक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स. उसके लिए आपको पुरानी कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है. तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी यू कैन स्टार्ट विद इट. How can I come and discuss the schedule? You can call the office. They will provide you schedule. They will provide you an appointment. How to divide time between subject as a beginners? Okay, so in the initial, say suppose if you start in January, so first 4-5 months you should be giving only to the GS, and around 7 to 8 hours daily should be given. Okay, one subject at a time. And then by May or June you can start with your optional, and then the time should be 60-40%. That means 60% of your time should go for GS and 40% of your time should go for your optional, till the time your optional classes are going on. So then later on, say after the optional classes are done, so you can divide the time as 70-30. 30% of the time should go for optional and 70% of the time should go for GS. Suggest NCERT books for beginners. Okay, देखो 6 से 10 तक की आपको सारी सोशल साइंसेस की किताबें पढ़नी चाहिए. ओके, इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी आती है. ठीक है. एंड देन आपको जनरल साइंस की किताब भी पढ़नी है. बट इन 11th एंड 12th यू हैव टू रेफर टू द ज्योग्राफी. यू कैन अवॉइड द साइंस वाली किताब. ओके, कंप्लीटली. हिस्ट्री में भी आपको बहुत सारी एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं. कुछ बेसिक एनसीईआरटीज हैं दैट यू नीड टू रीड. ओके, एग्जैक्टली मेरे को वो नाम नहीं याद है उनके. दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. मतलब आपके ग्रुप में डाल सकते हैं बाय हमारी टीम आपको बता देगी कि विच आर द एनसीईआरटीज विच आर इंपॉर्टेंट. बट 6 से 10th वाली तो आप सारी पढ़ सकते हो. दे आर वेरी स्मॉल. इवन मतलब आपको 1 से 1.5 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, I think I have taken up the questions. So that is it from my side. All the very best to everyone. And आप लोगों के कोई और queries होंगी तो feel free to call LevelUp IS and we'll be more than happy to help. Thank you so much. All the very best.